Where did we do in the last class? Emission of sulfuric acid polymerization. Okay, fine. So we're done with alkenes, I guess, right? We're done with the alkenes. Alias, I think Alias not sent the audio. Chat. Please write the heading, Noha. Alkyne. Now, alkyne will have a general formula that is CnH2n minus 2. Now, what is this? This is a hydrocarbon. Hydrocarbon with at least one triple bond. It should have at least one triple bond. So in this case also, we are going to look at the method of preparation and then the chemical properties. Okay? So please write method of preparation. In method of preparation, first of all, write from calcium carbide. In calcium carbide, what do we do? First of all, how do we make calcium carbide? You have to understand, first of all, that we start with calcium carbonate. We heat it to form calcium oxide. Calcium oxide and carbon dioxide is formed. Once we get calcium oxide, we react this with carbon. And here we get calcium carbide, CaC2, plus calcium monoxide. This is calcium carbide. Now, calcium carbide, it reacts with water and it gives ethine, that is C2H2, plus calcium hydroxide. So we can use this method of preparation only for ethine. Only used for the preparation of ethine like that. Ethine. Assalamu alaikum, Mariam. Am I audible? Yes, sir. How was your test? It was good, sir. Can you send the question paper later? Okay. Raise your hand once you are done, guys. Waiting for Alia and Mariam. Okay, all of you done? Now, right, the second method of preparation, number 2,
from vicinal dihalides. These are the only two methods of preparation. Second is from vicinal dihalide. So here you will have CH2 bonded with CH2. Both of these carbon atom will be having halogen and another halogen here. First of all, you react this with alcoholic KOH. This will give you alkene. One of the halogen and one of the hydrogen is going to be removed. So एक से आपने remove कर दिया halogen and double bond. You will have CH, one एक से hydrogen, and halogen is still here. After this, you need a strong strong base, that is NaNH2, sodium amide. This will remove halogen from this carbon and hydrogen from that carbon. So you'll have CH, triple bond CH. So there is elimination reaction, 2 times elimination reaction. पहले alcoholic case से double bond बना, फिर उसके बाद you will be getting triple bond. So basically, if you have, let us suppose 4 carbon atoms like this, you have Br and Br here. In the first step, alcoholic KOH. The second step, NaNH2. You will get CH3, single bond carbon, triple bond carbon, and then CH3. So the two groups that are attached here, they are as it is, only the hydrogens are being removed. Hydrogens and the halogens here. Okay, please write this down. After this, you will write chemical properties. In chemical properties, the first is the acidic character of alkynes. How to identify for acidic character? You just need to react this with an active metal. So you have H, C triple bond, CH, plus, let us suppose you have sodium. Now, if I don't know whether you remember it or not, but acid reacts with metal to give hydrogen gas. Now, if you are reacting a compound with metal and then it gives hydrogen gas, that means it is an acid. What happens basically, here you get H2 plus you get H, C triple bond C negative and Na positive. Now you can react this one more time with sodium, and what you are going to get is carbon triply bonded with carbon triply bonded with carbon. Both of these will be having negative charges, and sodium positive will be stabilizing them. Sodium positive like this. Okay. So from this particular reaction, as it is liberating hydrogen gas, we can say that alkynes are acidic in nature. And similar reaction is shown when you react this with base. For example, if you have CH3, C triple bond C, H, if it reacts with sodium amide NaNH2, then it is going to give you CH3, single bond C, triple bond C with a negative charge and Na positive. So from here, we can say that the hydrogen that is attached to triply bonded carbon atom, it is the acidic hydrogen. It is the acidic hydrogen. Now write it with me. Alkynes are acidic in nature due to the hydrogen attached to sp hybridized carbon atom.
which is more electronegative and can easily bear a negative charge. All right, next. sp carbon is more electronegative due to higher percentage S character. And therefore acidic strength in hydrocarbons, it is the least in alkane because alkene has sp3 carbon. Then we have alkene, it has acidic strength greater than alkene, which is having sp2 carbon. And then the highest is with alkyne, which is having sp carbon. If I look at the sp3 carbon, then it is having only 25% S character. This is having S, देखिए कैसे हो रहा है ना, S and P3. So we have 4 orbitals taking part in hybridization, and one of them is S. So 25% S character. Here we have 3 orbitals, one S and 2P. So it is 33% S character. Here we have 50% S character. Right? And higher the S character, higher is the acidic strength. So now alkynes में सबसे ज़्यादा होता है. Now if I compare different types of alkyne, there is basically 3 types of alkyne that you can have. An alkyne in which both the carbon is having hydrogen. This is most acidic, followed by CH3, C triple bond CH. Now this carbon is having only one carbon with hydrogen, one triply bonded carbon with hydrogen. So this hydrogen is only acidic. That is why this is next in the line. And the least acidic is the least, काफी कम होता है इसका, because it does not have any hydrogen attached with the triply bonded carbon atom. So you have C bond, then you have CH3. So the triply bonded carbon atom, it is not having any hydrogen atoms. That is why it is the least acidic. Write this down. Raise your hand once you are done. Waiting for Mariam and Noha. Now, right next, the second type of reaction that it shows is the addition reaction. Please note, as alkynes have 2 pi bonds, they show addition reaction and can add 2 molecules of hydrogen, that is H2, halogen, that is X2, hydrogen halide, that is HX, and water, that is H2O. So we have to see 4 addition reactions, hydrogen का, फिर halogen का, फिर hydrogen halide, फिर water. ठीक है? All of these are important. कुछ इसमें से आसान है और कुछ थोड़े से मुश्किल है जिनको समझना है. And the most important one is the case of water. So first of all, we'll start with simplest one, that is hydrogen. Addition of hydrogen. Now we have CH triple bond CH. If it reacts with hydrogen, the presence of platinum. So if I am taking only one molecule, then the
मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 1:1 का रेशियो लेंगे अगर हम ना, 1 मोल ऑफ alkyne 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और 2 moles of alkyne 2 moles of hydrogen, 5 moles of alkyne 5 moles of hydrogen, then in that case I will be getting CH2 double bond CH2. Specifically अगर mentioned हो ना 1 equivalent, then you will get only alkene, but if not mentioned, then alkene will again react with the hydrogen and it is going to give you alkene, that is CH3 bonded with CH3. Similarly, if you have something like this, CH3 C triple bond CH, उन्होंने अगर सीधा कहा H2PT, there is nothing mentioned, then you will write that it is what, CH3 CH2 single bond CH3, right? If you have something like this, CH3 C triple bond CH, second, C triple bond CH plus hydrogen and bracket 1 equivalent, generally ये होगा नहीं, then it is going to give you CH3 CH double bond CH, ठीक है? It's rare, it's very rare that they are going to give you 1 equivalent. So basically आप ये कह सकते हैं एल्कीन में आपने हाइड्रोजन ऐड किया, एल्काइन में आपने अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड की, 2, it is going to give you alkene. After this you write addition of halogen. Addition of halogen, ठीक है? Now here if you have H C triple bond CH and you react this with X2, this is going to give you CH double bond CH and आपके पास 2 halogen attach हो जाएंगे. अगर now this reaction can occur once more and you will have CH single bond CH और दोनों कार्बन में you will have halogens like this, X X X X, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जरा, specifically if you have, let us suppose alkyne reacts with ऐसे लिखें just a second, when alkynes react with bromine water, it loses its reddish brown color, है ना? We have seen a similar reaction with alkenes also, and we know that any unsaturated carbon, it is going to, any unsaturated hydrocarbon, it is going to decolorize the bromine water, है ना? That is why we'll write this, and then write, you can C triple bond C, there is some groups attached here, plus Br2, this is going to decolorize. तो ये क्या देगा वो पहले लिख लीजिए. Whatever groups are attached to carbon, they are attached as it is, there is single bond carbon, और दोनों में आपने एक Br यहाँ पे, एक Br ऊपर, यहाँ पे भी एक Br और एक Br नीचे, इस तरह से. And whatever groups are attached on these carbon, they are attached as it is, है ना? There is no change here. Important thing is that alkynes react with bromine water and water, then it loses its reddish brown color. Br2 is reddish brown in color. लिख लिया आप लोगों ने? Once you're done, then you write C part. Addition of hydrogen halide. Right here, it forms gem dihalide. ठीक है, विसिनल डाइहालाइड तो आप लोगों ने देखा है. What is gem dihalide? Gem dihalide is when 2 halogens are attached
to same carbon. मतलब क्या है? For example, if you have H, C triple bond CH, it would react with HBr. एक कार्बन को मिल जाएगा हाइड्रोजन. So this first carbon is CH2 carbon, double bond CH, and then you will have Br. Now this can react once more with HBr. और फिर यहाँ पे क्या होगा? The first carbon will get the hydrogen, so you'll get CH3 carbon, and the hydrogen is as it is, and there are two Br groups attached. Hydrogen as it is, Br here and Br here. So the same carbon atom, it is having two bromine, that is gem dihalide. For example, if you have CH3, CH, to react with HBr, and it is going to give you CH3. Now this middle carbon atom will have the two Br, and the last carbon will be a CH3. Waiting for Mariam and Noha. Just waiting for Noha now. Now, all of you guys, please leave your pen. अभी साथ साथ मत लिखिएगा, ठीक है ना? आराम से पहले देखिए. Addition of water. Now, let us suppose we have CH3, C triple bond C, H, and we are adding water. Now, this is basically done in the presence of HgSO4, mercury sulfate, and H2SO4, that is sulfuric acid. So you will have Hg2 plus or H plus also, ना? ठीक है, वो हम दिखाएंगे बाद में. But please see, if you have CH3, C triple bond CH. Now in water, the negative part is going to attach on that carbon atom that is having less hydrogen, right? According to the Setzeff rule. So oxygen will attach to the carbon that is having less hydrogen. So CH is carbon by attach हो जाएगा, and hydrogen will attach on this carbon atom. So what we are going to get? We are going to get CH3 carbon bonded with oxygen, then hydrogen, and then here we are going to have a double bond CH2 like this. Now, if you see this properly, आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए isomerism. This is a carbon atom which is having a double bond and a OH group. So it is having double bond, that is by En, and OH group की वजह से all. So this is actually a enol. And in enol, if you remember tautomerism, जब हम लोगों ने isomerism पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है? Because of this particular double bond and the hydrogen attached with oxygen atom, which is highly electronegative, the hydrogen will get a delta positive charge, and this doubly bonded alkene, it is going to attack on hydrogen. Now, since the hydrogen is getting electron, it will lose the electron towards the CO bond, and it will make a ketone. Now, tautomerism है ना, ये क्या होता है? This is tautomerism. आपकी किताब में आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है यहाँ पे, but which type of isomerization is happening? It is tautomerization. ठीक है? So you will get CH3 carbon, and since this carbon atom is getting hydrogen, you will have CH3, and the oxygen will have a double bond with carbon here. So we have got, this is propane 2-on, which is known as acetone in common name. Fine. So what are we getting on hydration of alkyne? We are getting a carbonyl compound. एक आपको ketone मिल रहा है. Similar reaction देखिए. See here guys. You have H, C triple bond C,
and you have H. So plus H2O. Now here both the carbon atoms are same. So no matter wherever you can attach the oxygen and the hydrogen. This is done in the presence of Hg2 plus as HgSO4 and H positive from H2SO4. So you can have this reagent also, Hg2 positive and H positive. Now here same thing we will do. HOH, oxygen attaches to this carbon, hydrogen attaches to this carbon. In the case of ethyne, you don't have to really see which is the carbon having less hydrogen, because both the carbons are having same hydrogens, right? Now what will happen? You will get HC. This will have OH, oxygen bonded to hydrogen, double bond, and then you will have H2 here, CH2. Now what is going to happen? Again, the same thing is going to happen. This hydrogen will have delta positive charge. So just a second. This pi bond will attack on hydrogen. The hydrogen will lose its electron here. And after tautomerism, you will be getting HC double bond O bonded with CH3. This is what? This is ethanol. है ना? It is now aldehyde. इसको common name इसका है acetaldehyde. So you can write hydration of alkynes in the presence of HgSO4 and sulfuric acid, H2SO4, gives corresponding aldehyde and ketone. Raise your hand once you're done. Just waiting for Noha now. इस रिएक्शन को खास तौर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? दिस इज ओनली द वन जिसमें आपको थोड़ा अनकन्वेंशनल सा प्रोडक्ट मिल रहा है. अदरवाइज इन द प्रीवियस केसेस यू आर गेटिंग अ वेरी कन्वेंशनल प्रोडक्ट जिसमें सिंपल लॉजिक से भी आपका आंसर आ सकता है. हियर यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे पहले तो सिंपल लॉजिक लग रहा है that hydrogen H water is getting added on the alkyne. After that, you have to remember that tautomerism happens. Now, after this, we have the last reaction in alkyne, that is polymerization. Now, polymerization दो किस्म के होते हैं. You can write polymerization. What is this? This is third. हम ना तीसरा reaction लिख देखो actually. Third reaction, that is polymerization. Polymerization. Now, in polymerization, एक आपका होता है linear polymerization. First is linear polymerization. So in linear polymerization, basically आपको यहाँ पे कोई ना रिएक्शन मतलब ऐसा रिएजेंट वगैरह नहीं दिया है. So आपको बोला है कि n number of ethyne, that is CH triple bond CH, it is going to get polymerized into CH double bond CH single bond CH. Then you will have again एक second, my bad. It will be like this.
CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH. Now this CH is having some bonds here, and then again single bond CH, like this. Fine. Now this will go on. Now this is the polymer and this is the monomer. Sometimes आपसे सवाल किया जा सकता है, they will give you a polymer and they will ask you what is the monomer. Fine. What is the monomer? So if you see here, let's suppose this is the polymer that has been given. What is the monomer? तो monomer देखने के लिए आप क्या कीजिए, सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या आ रहा है पहले वो देखिए आप. सो यू टेक वन सिंगल बॉन्ड और ये दूसरा सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में क्या आ रहा है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच. Then again you will see CH double bond CH. Here also you will see CH double bond CH. Right? Now the repeating unit here is repeating unit is what it is, CH double bond CH. तो रिपीटिंग यूनिट में आपको क्या करना है, if they ask ना what is the monomer, तो मोनोमर के लिए आप क्या कीजिएगा, मोनोमर में you will identify what is the repeating unit और उसमें एक पाई बॉन्ड लगा दीजिएगा, दैट्स इट. सो रिपीटिंग यूनिट आपके पास क्या है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, तो मोनोमर क्या हो जाएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. समझ में आ रही है? Yes, हाँ sir. जी, ठीक है. Now this is the only one polymerization that you have to learn in linear. Second है आपका, please write cyclic polymerization. In cyclic polymerization, you will take ethyne CH triple bond CH in high heat red hot Fe tube around 873 Kelvin. You will get benzene. Just waiting for Mariam now. Now write the next topic. See, alkyne is done. ठीक है, अब आपके पास है कुछ टॉपिक्स हैं एल्कीन और एल्काइन एल्कीन्स में जो हम लोगों ने नहीं देखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कॉन्फर्मर्स और कॉन्फर्मेशंस इन एल्कीन. ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्फर्मेशंस, इसके लिए just give me a second. Guys, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान दें. Here we are having, this is actually ethane molecule and this is the carbon atom
This is the carbon atom. This carbon is having 3 hydrogens. अब एक हाइड्रोजन को स्पेसिफाई कर दिया, इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर दे दिया है ना. दिस कार्बन इज आल्सो हैविंग 3 हाइड्रोजन्स और एक को थोड़ा सा स्पेसिफाई करके ब्लू कलर दे दिया है. Otherwise, all of these are what? Hydrogens itself. ठीक है. So you have to see the relation here, है ना? The green और blue के बीच में. So just let me clear the drawings. ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे. Now, I'm orienting it in such a way that you can see the hydrogens only, है ना? तो हमको hydrogens के spatial arrangements में ध्यान देना. See where are the hydrogens located? If you look at the blue and green hydrogens right now, they are completely far apart, है ना? Correct है guys? Yes or no? Please tell me. You can also see the distance. यहाँ पे अगर आप देखिएगा, distance is also quite large. But since the rotation along single bond, the sigma bond is allowed. That is why what can happen? This particular bond, it can rotate. The carbon-carbon bond, it can rotate, and it will rotate like this. Fine, it is rotating. Now it rotates very easily. Now, if you look at this particular configuration, then here the carbon, the green carbon and the blue carbon, they are quite near. Yes or no? Please tell me, guys. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Now, when they are near, they will actually what? There are electrons. When I say hydrogens are near, so you should remember that the carbon is binded with hydrogen, the carbon is bonded with hydrogen, and there in between there are electrons. And there will be electronic repulsions if they are near to each other. If I compare it with the case where they are what? Where they are away from each other. For example, here if you see, all the hydrogens are very far apart from each other, right? So these are the two extreme conditions. And as you can see, there is a difference in energy in both of the configurations. And both of these configurations are interchangeable via the rotation of CC bond. तो इस particular configuration के change को बोलते हैं conformers. ठीक है. So when the spatial arrangement of atoms which can be changed by the rotation of CC bond, they are called conformers. ठीक है. The spatial arrangements of atom, as a spatial arrangements of atom which can be changed by the rotation of CC bond. So this is what we have to study. तो यहाँ पे आप कुछ points लिखिएगा. If you don't understand something, then please let me know. You will write first of all, since rotation along sigma bond is allowed, this results in different spatial arrangements of atoms in space. Such spatial arrangement of atoms which can be changed by the rotation of CC bond are called conformations, conformers, and also known as rotamers. Now, if I keep rotating, then there can be infinite number of conformers, but we have to specially study only two. Just give me a second, guys.
I'm sorry, guys. I was saying that since we can have infinite number of conformers, because up slowly you can rotate n number of times around. So right, therefore alkanes have infinite conformers. Now to view these particular conformers, we are going to take the case of ethane. Okay? So you write here conformers of ethane. So in order to view the conformers, we should have a different way of writing the structure. So uske liye there are two different ways of projecting it. One is known as sawhorse projection. So please write sawhorse projection. In sawhorse projection, what do we do? We write the two carbon atoms of ethene as a slant line like this. So the two ends are representing the carbon atom. This end and this end is representing the carbon atom. In order to show the hydrogen, you just make hydrogens like this. So here we have one hydrogen. Here we have another hydrogen, and here we have another hydrogen. One of the projection could be if everything is completely same, right, in both the carbon atoms. Okay, so the hydrogens are facing each other. They are very near. Then what could happen? This hydrogen will actually be eclipsed by this hydrogen. So because this hydrogen, this particular hydrogen, is just behind the front one. So this front one will be eclipsing it, and that is why this is known as eclipse configuration. Eclipse configuration. Now in eclipse configuration, since the hydrogens are very near to each other, that's why what will happen? There will be more repulsion between the hydrogens, more repulsion. It will be higher in energy. It will have higher energy, and it will be less stable. A different case would be if the hydrogens of one of the group, for example, let us say this one, this is completely rotators. Wow. Rotate, flip vertical. Fine. So they are like this, completely flipped. Now the hydrogens are far apart from each other. And this configuration is known as staggered configuration. अच्छा, in between whatever we are having, इसको एक end में लिख लीजिएगा staggered, and in staggered configuration the hydrogens are far apart. That is why it will be having less repulsion, lower in energy, and will be more stable. Now, in between these two, whatever configuration we have, for example, if you have like something like this, this is fine. So this is neither eclipse nor it is staggered. It is in between. So in between जो भी configuration आएगा उसको बोलते हैं skewed configuration.
और skew configuration. In between कोई भी आ जाए ना, this is one of the configuration which is skew. In between eclipse and staggered, there will be millions of configuration. All of them will be known as skew configuration. Skew configuration, it is between eclipse and staggered. It is neither very less stable, it's neither very unstable as eclipse, nor it is very stable as staggered. It is in between. So this is how we show in the sawhorse projection. Write it down. Raise your hand once you're done. ये चीज आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है कि एक्लिप्स का कम स्टेबल होता है, स्टैगर्ड का ज्यादा स्टेबल होता है. एंड द रीजन आल्सो व्हाई. Waiting for Alia and Noha. Just waiting for Noha now. Also, just a tip for writing this eclipse and staggered, उसमें ये है कि जो आप दो कार्बन एटम के लिए लाइन बनाए ना, see that it is near to straight rather than very slant. एक तो इस तरह अगर slant बनाएगा तो it will be difficult इस तरह से समझना. ठीक है, अब ये इस कार्बन एटम के लिए हाइड्रोजन बनाने जाइएगा तो it will be like this. Yeah, it will not look very good. So when you are making the lines for two carbon atoms, make it like as make it very near to straight line but not straight. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बनाने में आपको आसानी होगी. ठीक है, दिस इज जस्ट अ राइटिंग टिप, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आपको लिखने में आसानी होगी इफ इट इज मोर नियर टू स्ट्रेट लाइन rather than very slant. Now the next type of projection that we can use, it is known as Newman projection. The second रेड पेन से, ठीक है. Second, it is Newman projection. Now, in Newman projection, we show the first carbon atom with this dot and the second carbon atom with a circle behind it. So we have two carbon atoms in ethane. The first one is shown by this dot and the second one is shown by the circle behind it. So for dot, I will show the hydrogens like this. These are the three hydrogens. For eclipse structure, see, I am just making this with a different color so that you know that it is eclipse. You will make it from this carbon, है ना, ये circle carbon है. This is just behind ना, इसको थोड़ा सा बस ऐसे just behind करके ऐसे हाइड्रोजन, just behind करके ऐसे हाइड्रोजन, and this is just behind करके ऐसे हाइड्रोजन. ठीक है, so this is what, this is the eclipse form. For staggered, keep the first carbon atoms hydrogen as it is, और जो पीछे वाला हाइड्रोजन, पीछे वाला कार्बन है, उसके हाइड्रोजन कुछ आप इस तरह से शो कर सकते हैं. Just opposite to the initial, just opposite to the initial, and just opposite to the initial. Here you can very easily see that all the hydrogens are very far apart from each other. And this is what, this is staggered configuration. Write this down. Raise your hand once you are done. Done everyone? ठीक है. After this, you will write geometrical isomers for alkene of alkene. Alkene में ये हमारे हमने छोड़ा होता. ठीक है, please write geometrical isomers of alkene.
ठीक है, तो जो जीआई होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो ही होते हैं। नाउ देर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ एल्कीन पॉसिबल। एक को बोलते हैं सिस, एक होता है सिस फॉर्म, और एक होता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नाउ सिस में आप याद रखिए, सिस का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम, एंड ट्रांस का मतलब होता है which has gone on that side, same side and that side, इस तरह से cis is same and trans is that side. So what is cis? Let's see, when you have two identical groups or atom on same side of डबल बॉन्ड। ठीक है, सेम कार्बन पे हमने नहीं कहा है, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड का है। ठीक है, सो दैट विल अकर इफ यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x। सो ये डबल बॉन्ड हो गया, उसका एक साइड इधर, दूसरा साइड इधर। ठीक है ना, इस डबल बॉन्ड को ऐसे काटिएगा, डबल बॉन्ड को ऐसे मत काटिएगा। ठीक है, सो यू हैव टू सी द साइन, डबल बॉन्ड ऐसे है। ठीक है, इस तरह से ना डबल बॉन्ड, उसी तरह से सेम साइड में क्या हो गया, सिस फॉर्म। इन ट्रांस व्हाट वुड हैपन, ट्रांस की डेफिनेशन ये होती है, प्लीज राइट विथ मी, टू आइडेंटिकल ग्रुप्स और एटम ऑन डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड, एक ही बात है ना, दो ही साइड है। ठीक है, डबल बॉन्ड के दो ही साइड है, आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड। सो यू हैव कार्बन एटम, डबल बॉन्ड कार्बन एटम, अगर x यहां पे है, इट इज इन दैट साइड, दिस साइड, तो उस कार्बन में, दूसरे वाले कार्बन में अपोजिट साइड में। ठीक है, ये y यहां है तो y उधर वाले कार्बन में इधर होगा। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म। अब एक चीज ध्यान रखिए, नोट, if two same groups or atoms are on a carbon atom with double bond, then it won't show geometrical isomerism। ठीक है, जो या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, write this down, raise your hand once you're done। Sir, yes sister me, can you give an example? हाँ श्योर, अभी हम लोग करेंगे। Okay. No, like for the note you made us write. हाँ वही वही, ये करेक्ट, नोट के Okay. लिए। अच्छा, ये आया था क्या आपके एग्जाम में? No, sir. I'm just asking. नहीं, चलिए, अच्छा जस्ट आस्किंग, अच्छा ठीक है।
सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं है, एल्कीन आ रहा था ना आपके टेस्ट में वैसे? Yes, sir. Cis and trans isomerism this came in the exam. अच्छा, बस लिखने के लिए या फिर मतलब We क्वेश्चन had था to कि? identify which structures. अच्छा, विल शो सिस ट्रांस आइसोमर्स। Yeah, yeah. हाँ ठीक है, वही सेम एग्जांपल हम करा। वेटिंग फॉर मरियम यू एंड नोहा। Just waiting for Noha now. Okay. See, same question. Huh? Which of the following will show geometrical isomer या फिर cis trans isomer? ठीक है, ध्यान रखिए। For example, if you have to suppose CH3 whole twice carbon doubly bonded with carbon, which is having one hydrogen and then C2H5. ठीक है. So first thing that you have to do is identify the carbon which are having double bonds. तो ये carbon atom है, this is carbon number 1. ये carbon है, that is carbon number 2. So what are the groups attached on carbon number 1? कौन से? देयर विल बी टू ग्रुप्स ना अटैच, जैसे कार्बन 2 में आपके पास क्या क्या है? यू हैव हाइड्रोजन एंड C2H5। ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन है एंड C2H5। इन कार्बन 1 व्हाट आर द ग्रुप्स अटैच्ड? नहीं दिख रहा किसी को। टेल मी गाइस, व्हाट आर द ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द कार्बन नंबर 1? CH3. CH3 and CH3. CH3. So two same groups on carbon atom with double bond, that means it won't show cis trans isomers. Make sense? हम जी बताएं। Yes, sir. ठीक है, सेकंड, CH2 double bond with CBr2. Will it show? Tell me guys. Cis trans isomers. हाँ जी, लेकिन फिर से वही करना है ना। इस कार्बन आटम पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं? टेल मी गाइस। नोहा आप बताइए, इस कार्बन आटम में। यस नोहा। This carbon atom is having what groups other than the double bond? Oh, Noha, at least turn your mic on. G, are you saying something? No, you're not audible. Alia, tell me what groups or atoms are attached on this carbon atom? Two hydrogen. Hydrogen and hydrogen. और यहाँ पे इस कार्बन आटम पे क्या है? Bromine. Two bromine. Yeah. ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, है ना? तो यहाँ पे भी क्या है? एक कार्बन आटम पे भी अगर आपके पास सेम ग्रुप्स आ गए, देन इट इज नॉट गोइंग टू शो सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब देखिए यहाँ पे ना दिक्कत क्या होती है, अगर आपको इस तरह से दे दिया रहता ना, दिस इज द सेम थिंग, करेक्ट है? Yes. अब आप लोग को ऐसे कोई कंफ्यूजन आ सकता है, हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, दैट इज व्हाई दिस विल बी सिस। क्या ख्याल है, राइट और नॉट राइट? Not right. व्हाई मरियम, वेयर इज द फ्लॉ? Because it's not on the same side of the double bond. यप, दैट इज करेक्ट। सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड बहुत जरूरी है। सेम साइड इज हाफ नॉलेज, है ना? सेम साइड अगर आपने याद करके रखा ना, सिस और ट्रांस में बहुत बार ये होता है कि सेम साइड क्या मतलब, वो सेम साइड बस ऐसे सेम साइड में दिमाग में कम से कम आपको ये रखना है कि सेम साइड ऑफ व्हाट, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो अगर आप डबल बॉन्ड की तरह देखें, ठीक है, तो हाइड्रोजन के इधर क्या Br है,
वो भी अलग। इधर भी हाइड्रोजन के पास क्या है, Br है। ना ही सेम है ना ही डिफरेंट है, इधर कहीं पे भी ना सिस बन रहा है ना ट्रांस बन रहा है, ना सेम साइड में है ना अपोजिट साइड में कोई चीज सेम। ठीक है, सो इट इज व्हाट दिस नाइदर गोइंग टू शो सिस और नाइदर नॉर इट इज गोइंग टू शो ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, ये सिस और ट्रांस आइसोमर देगा ही। बट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस द थर्ड वन, ठीक है, अब बताइए, देखिए which carbon atom is having double bond, this carbon atom is having double bond। ये बताइए what are the groups attached here, क्या है? Benzene हाँ, and एक हाइड्रोजन और समथिंग एल्स कुछ है, पता नहीं, छोड़ो छोड़ो। हाँ, कुछ तो अलग ही है, हाइड्रोजन नहीं है कम से कम। इधर हाइड्रोजन है एंड देन व्हाट वी हैव समथिंग एल्स, कुछ तो अलग है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट वी आर नॉट हैविंग दिस कंडीशन, आपके पास टू सेम ग्रुप्स नहीं है, वी आर हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बोथ द कार्बन एटम्स, राइट? We have two different groups on both the carbon atom. That is means that it is going to show cis trans isomers. अब ये शो करता है तो इसको दिखाई देते हैं। So you will write C double bond C. There will be four groups. C double bond C. There will be four groups. पहले आप सिस बनाना चाहते हैं तो सी व्हाट इज द आइडेंटिकल ग्रुप, यहाँ पे आइडेंटिकल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को आपने एक साइड कर लिया। इस कार्बन पे था C6H5, उसको ऐसे लिख दिया। इस कार्बन पे था CH3, उसको ऐसे लिख दिया। सो अब कौन सा करना है आपको, हाइड्रोजन को करना, तो हाइड्रोजन को ट्रांस कर दिया। दिस इज हैविंग C6H5 एंड दिस इज हैविंग CH3। So this is the cis isomer and this is the trans isomer। ठीक है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। राइट दिस डाउन। उसके बाद फोर्थ है, आप लोग बताइएगा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो सिस और ट्रांस बताइएगा। ठीक है, you will first of all tell me what are the groups attached on the carbon atoms। CH3, CH double bond, C, Cl bonded with CH3। ठीक है, सो इस कार्बन में कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इस कार्बन में कौन से, वो आपको Third, एक सेकंड एक सेकंड, you will send the answer। हाँ मरियम, if you have a question, yeah, yeah. tell me। In the third one, there is only one C6H5, right? हाँ, So there so needs to there, like there should be another one. why another one? We'll just see hydrogen No, see the what is telling, two identical groups or atom on the same side, or atom. Okay. है ना? Makes sense। Yes. नॉट मतलब दोनों तरफ सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे मतलब इवन दिस इज ऑल्सो सिस। और अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड सी एक्स एक्स इधर वाई जेड भी हो जाए तब भी दिस इज ऑल्सो सिस। Oh, okay, okay, okay. ठीक है, Yes. ठीक है, बस एक आपका ग्रुप मतलब सेम एंड ऑल्सो आइडेंटिकल भी हो, अगर सेम बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसे मान लीजिए अगर, खैर वो थोड़ा सा हायर हो जाएगा, छोड़ दिया आप, इतना इतने ही Yes, काफी sir. रखिए I कि एक साइड understood. पे आपके पास। हाँ, Yes. This thing, it will show cis trans isomer
sir. अच्छा ठीक है, fine. Now show me the cis and trans isomer. आपकी तबीयत ठीक है आलिया? Yes, sir. बेहतर है. Yes, correct Miriam, very good. Waiting for Noha and Alia. Alia, you don't have phone or what? You have your phone, Alia? Yes, sir. Sending. Noha, what about you? आपको कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, Noha? Sir, I don't have my phone with me. अच्छा, so can you tell me the answers? Tell me what will it show cis or trans? First of all, you tell me what are the groups attached on this carbon atom? One hydrogen and one carbon. CH3. And what about this? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बोल नहीं पा रहे? Oh, sir. अच्छा ठीक है, it's fine. If you can't, मतलब पता नहीं, गला वला खराब. ठीक है, it's fine. Don't speak. और तबीयत मत खराब कीजिए आप. Are you fine or you're not well? I'm just having थोड़ा सा fever. थ्रोट पेन, ठीक है, फाइन. थोड़ा सा फीवर, ठीक है, आप कोई बात नहीं. आप यहाँ बस देखते रहिए. इफ यू हैव डाउट लेट मी आस्क, है ना, यू कैन आस्क. एंड हियर यू हैव क्लोरीन एंड CH3. ठीक है. आलिया सी, देखिए आपने जो रीजन दिया है ना सिस और ट्रांस आइसोमर का, दैट इज नॉट एक्चुअली द करेक्ट रीजन. ठीक है. आपने बोला बोथ द कार्बन हैड CH3 ग्रुप, यानी आपको कहना है कि यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, इस वजह से सिस और ट्रांस आइसोमर शो करेगा. करेक्ट आलिया, यही कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. बट व्हाट अबाउट दिस वन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये शो करेगा? No, sir. भाई क्यों? यहाँ पे भी तो दोनों कार्बन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है. Yes, sir. But hydrogen, but was it's same like सी, तो क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? किसी एक कार्बन पे सेम एटम या ग्रुप नहीं होना चाहिए, है ना, तब सिस और ट्रांस आइसोमर्स आएगा. मेक सेंस? सर वापस से एक. वापस से बोले. Yes, किसी डबल डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दो कार्बन एटम से किसी yes. एक में भी दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए. जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH2, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, CH2, और मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ऐसे होता है CH और CH3. क्या अब शो करता? अब शो करेगा? व्हाट डू यू थिंक Yes, आलिया? yes, sir. करेगा? करेगा? Yes, sir. एक साइड H होगा like on first carbon. हाँ, जस्ट अ सेकंड. यहाँ पे हाइड्रोजन रख दें. Yes, यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, yes, राइट? sir. Yes, sir. CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है. यहाँ पे Yes, sir. हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, CH3 एंड हाइड्रोजन. आर दे डिफरेंट और आर दे सेम? Oh no, they look same. Yeah, they look same. दे लुक्स, दे आर इवन सेम ना. अगर Yes, इसको sir. हम बस फ्लिप कर दें, लाइक अगर हम इसको बस रोटेट कर दें इस तरह से Yes, sir. वर्टिकली, तो आपको सेम चीज मिल जाएगी, राइट? ये CH3 Yes, आ sir. गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक है. सो बेसिकली क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है दैट द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम शुड नॉट हैव टू सेम ग्रुप्स. Okay. ठीक है.
और शायद EZ आपने पढ़ा है, EZ आइसोमर्स, EZ नॉमेनक्लेचर, EZ नहीं, No. नहीं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। उससे और ट्रांस से ना थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, जैसे आपके पास है कार्बन, इसमें लगा हुआ है आपके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH, CH नहीं, आप एक मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और लगा हुआ है यहाँ पे एक CH3। इन दिस केस आप देखें अगर, तो यहाँ पे देर इज नो ग्रुप सेम, किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो उसके बाद फिर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया जाता है, देन वी हैव द EZ नॉमेनक्लेचर रादर देन सिस और ट्रांस, दैट इज वन लेवल अहेड आगे ऑफ सिस एंड ट्रांस। ठीक है, सो हियर आल्सो बट देयर आर टू डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल, द रीजन बीइंग इस कार्बन एटम में देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड इस कार्बन एटम पे भी हमारे पास देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, देन ओनली द आइसोमर इज पॉसिबल। ठीक है, Okay. चलिए खैर, जो हमने बताना था आपको बहुत पहले बता दिया। So here also you can see that this carbon atom is having two different groups. This is also having two different groups. So we can have the cis trans isomer be something like this. You will have, let us suppose, क्या यहाँ पे सीन है CH3, तो CH3 और CH3 को एक साथ रख देते हैं पहले। CH3 and CH3 are here, hydrogen and chlorine are here, and here CH3 and CH3 are in the trans position. Here we have hydrogen and here we have chlorine. So this is same group on same side, so it will be cis, and the same group on opposite side, so it will be trans. ठीक है, ध्यान दीजिए। राइट हियर, लेट्स सपोज इफ यू हैव ब्यूट 2E, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर और उसकी प्रॉपर्टी, सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्यूट 2ene। ध्यान दीजिएगा जरा, you have carbon doubly bonded with carbon, the four groups here. So if I take the cis form, in this case we'll have CH3, CH3 same side, hydrogen, hydrogen same side. So 1, 2, 3, 4 carbon atoms. Second carbon is having double bond. In transform, what will happen? CH3, CH3, hydrogen and hydrogen like this. Now, important part is the dipole moment here. If you look at both the carbon atoms, this is also sp2, this is also sp2. So obviously these are more electronegative. When they are more electronegative, they will be pulling the electrons from the CH3 and making a dipole like this. पर एक डाइपोल आएगा इस तरह से, ठीक है। नाउ इफ यू टेक द रिजल्टेंट, देयर इज अ डाइपोल मोमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिस आइसोमर, जो आपके पास सिस ब्यूट 2ene है। दिस इज व्हाट इट इज, पोलर मॉलिक्यूल। If you look at the transform, then transform there will be one dipole moment like this going in this side towards the sp2 carbon, and there will be a dipole moment like this going towards the sp2 carbon atom. Now these are what completely opposite and they will cancel each other. So that is why the trans bute 2ene, this is having a mu net of 0. That means what, it is non-polar. अब ये पोलर है सिस वाला फॉर्म और ट्रांसफॉर्म इज व्हाट, non-polar. Therefore what will occur, the cis form has higher boiling point than trans form of bute 2ene, as the cis form is polar. Does this make sense, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir.
Please copy this down. Guys, when are your holidays starting? The vacation, winter vacation? Any dates? Mariam and Noha? Hanji. I think from 24th. 24th, Sundays? Acha, 24th will be last class. I think. Okay, what about you, Noha? Tell me in the chat, Noha. It's the same. It's the same. Yeah, we are in the same school. Actually, you are in the same school. Okay. And okay, fine. So in vacation, I will take classes in the morning. Okay. जो आपकी ये मीन शाम में जो क्लासेस होते हैं वो तो होते रहेंगे डेली, बट आई विल स्टार्ट टेकिंग मॉर्निंग क्लासेस. ठीक है, व्हेन एज सून एज द वेकेशन स्टार्ट. सो अगर 24th से आपकी छुट्टियां हैं, then 25th will be a holiday because of Christmas. You can start from 26th. Sir, we And only have one chapter left, right? हाँ, तो फिर रिवीजन नहीं करना है आप लोगों को. Oh, okay. फिर आप लोगों को भी तो काम होगा ना, प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट करना होगा अभी, राइट? Yes, नहीं, sir. छोटे मोटे कुछ प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं क्या एंड ऑफ ईयर में? प्रोजेक्ट फाइल बनाना रहता है? नहीं. No. नहीं, सिर्फ But लैब लैब we का have to. प्रैक्टिकल. Yeah. लैब प्रैक्टिकल. तो वो भी काम हो जाता है ना, मतलब इट टेक्स मजदूरी टाइप की चीज है. ठीक है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आई नो दैट. दैट्स व्हाई डेली क्लासेस करके जल्दी से रिवीजन भी कंप्लीट करा लेंगे ना. देखिए, जितना जल्दी हो जाए उतना आप लोग को आराम है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आलिया, यू आर फ्री इन द मॉर्निंग्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आई गॉट इट. डन राइटिंग दिस? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes. ठीक है. सो एक क्लास बस रह रही है आपकी. आई कुड नॉट टेक yesterday because there was some incident. And I will take an extra class on this Friday for you guys, 15. तो हम उसका टाइमिंग अभी कर लेते हैं. How about same time on Friday? Mariam and Noha, tell me. Will it be fine? Sir, but I go out. अरे भाई, कितने बजे आते हैं वापस और कितने बजे जाते हैं बताइए? Can we do earlier? हाँ, Can we do earlier? अर्लियर. हाँ ठीक है, टाइम तो बताओ. Um, 5 over here, like 5 o'clock time. It'll be 7:30 in India, I think. 7:30. Can we do a bit earlier? No. Okay. Earlier is fine, no?